Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today we will learn about data flow diagram. My name is Momina Shaheen, uh, and the course title is Object Oriented Software Engineering. It's the lab course, and uh, the recommended book is mentioned here. Um, we are having this video for the lab, and I am telling you how to draw data flow diagram in this lecture. I am your course leader, Momina. Lab task is draw data flow diagram. Lab task is draw data flow diagram. So what is data flow diagram? The data flow diagram captures the flow of data in a system, and it describes data origination, transformations, and consumption in a system. There are four components in a data flow diagram. The first component is process. The second is data store. The third is source and sink, and the fourth is data flow. These are the standard notation that will be used when we draw the diagram in this view. There are four levels in data flow diagrams: context level DFT, level 0 DFT, level 1 DFT, and level N DFT. We will cover context DFT and level 0 DFT. This is the example of context diagram of burger food ordering system. In context diagram, there is only one process symbol. और यहाँ पे process क्या है? Food ordering system. The external entities in this context diagram are customer, kitchen, restaurant manager, and the data flow between the customer and food ordering system is customer give order to food ordering system and get the receipt from system. The kitchen get the food order details from the food ordering system. The restaurant manager get management reports from the system. The context diagram basically shows the system boundaries, external entities that interact with the system, and major information flows between entities and the system. In level 0 DFT, the context level DFT, the process in context level DFT is divided into four main processes. The first process is receive and transform customer food order. The second is update goods sold file. The third is update inventory file. The fourth is produce management report. And the external entities are same as in context level DFT. The first external entity is customer. The second is kitchen. The third is restaurant manager. The data stores are, the first data store is inventory file database, and the second is goods sold file database. Level 0 DFT shows the system major processes, data flows, and data stores at a high level of abstraction. And these processes are also labeled as 1.0, 2.0, 3.0, and 4.0. The first process is receive and transfer customer order, and the external entities are customer and kitchen. The data flow between the customer and process are the customer give food order details to the process and in return get receipt from the system. The data flow between the kitchen and the first process is the chef or kitchen receives order detail from the system. The second process is update goods sold file. The second process gets goods sold data from first process, and after updating the goods sold file, this formatted data is stored in the database. The third process is update inventory file. This process gets inventory data from first process, update the inventory file, and then the formatted inventory data is stored in inventory file. The fourth process is produce management report. This process gets data from these two data stores and then prepare a management report, and this management report goes to restaurant manager. तो ये है आपकी लेवल 0 DFT. बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, हम कॉन्टेक्स्ट लेवल में जो हमारा एक प्रोसेस है फूड ऑर्डरिंग सिस्टम, उसको डिवाइड कर रहे हैं फोर मेन सब प्रोसेसेस में और उनका इंटरेक्शन दिखा रहे हैं एक्सटर्नल एंटिटीज के साथ. और यहाँ पर हम डेटा स्टोर को भी शो कर रहे हैं जहाँ पर डेटा आपका रिजाइड करता है, तो उसको आपने डेटा फ्लो डायग्राम में लेवल 0 डेटा फ्लो डायग्राम में आपने उसको भी शो किया है. अब हम इसको देखते हैं कि इस डायग्राम को हम किस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं विजुअल पेपर.
Choose categories tab from start screen, then software and databases, then data flow model diagram. Then press the create button. For more shapes, go to more shapes, then choose software and databases, software, and choose the data flow diagram shapes. आप लेवल 0 DFT में विजियो में डेटा प्रोसेस को शो करने के लिए सर्कल भी है और यहाँ पर रेक्टेंगल से भी हम प्रोसेस को शो करते हैं। इसके अलावा जो आपको स्लाइड्स के अंदर नोटेशन गिवन है, ठीक है, अगर हमने उसी को यूज करना है तो यहाँ पर वो शेप यूज हो रही है विजियो के अंदर एंटिटी की, ठीक है, इसको हम प्रोसेस के लिए भी यूज कर सकते हैं। तो हम इसको लेते हैं, ड्रैग करते हैं और ड्रॉप करते हैं वर्क स्पेस पर, एंटर करते हैं द नेम ऑफ प्रोसेस, हमें नंबर भी करना है, उसको हम फर्स्ट नंबर दे देते हैं बिकॉज इट्स द फर्स्ट प्रोसेस। आपके पास जो एक्सटर्नल एंटिटीज हैं, आपके पास जो फर्स्ट एंटिटी है वो कस्टमर है, जो सेकेंड एंटिटी है वो आपके पास किचन है, इसको आप शेफ भी कह सकते हैं। अब जो डेटा फ्लो है बिटवीन द कस्टमर एंड द प्रोसेसेस ऑर्डर टू अ सिस्टम, आप डेटा फ्लो को भी लेबल कर सकते हैं। इसी तरह द इंटरेक्शन बिटवीन किचन एंड फर्स्ट प्रोसेसेस और द डेटा फ्लो बिटवीन द किचन एंड processes, kitchen get food order detail from the system. The second process in this diagram is update goods sold file. इसको हम लेबल करते हैं सेकेंड प्रोसेस। The data flow between first and second process is the second process gets goods sold data from first process. की डायरेक्शन जो है वो सेकेंड प्रोसेस की तरफ होगी। ठीक है, और ये आप the data flow between the second process is the second process gets goods sold data from first process. The third process is update inventory. In the data flow between the the third process gets data from first process. The third process gets inventory data from first process. After updating the goods sold file, this data is stored in a database. तो डेटाबेस के लिए आप जो नोटेशन यूज करेंगे, ये डेटा स्टोर की नोटेशन है जिसको आप यूज करेंगे। तो हम लेबल करेंगे D1 से एंड goods sold file, और जो इंटरेक्शन है बिटवीन द सेकेंड प्रोसेस
and the data flow is the data updated or formatted data, goods sold data. Data is stored in this data store. इसी तरह after updating the inventory, the updated data is stored in data store file. तो भी हम लेबल करते हैं और यहाँ पर हम डेटा फ्लो को भी लेबल करते हैं इन्वेंट्री अपडेटेड और फॉर्मेटेड इन्वेंट्री डेटा. इस तरह से देखिए हमने यहाँ पर 3 प्रोसेसेस को शो किया है और उनका इंटरेक्शन शो किया है with external entities and data stores. The fourth process is produce management report. This is our fourth process. And to produce the management report, this process gets data from data stores. So the data flow between the D1 and process 4 is the process 4 gets goods sold amount from data store 1 and inventory data from inventory 5. And after producing the management report, this data goes to the management report goes to external entity restaurant manager. So the data flow between the whole process and restaurant manager is the restaurant manager receives management report from the fourth process. तो इस तरह से आप लेवल 0 DFT किसी भी प्रोसेस की अगर आपको कोई केस स्टडी दी जाती है या आपको आपके प्रोजेक्ट की असाइन किए हुए प्रोजेक्ट्स उनकी कहा जाता है कि लेवल 0 DFT बनाएं तो आप इस तरह से लेवल 0 DFT जो है वो बना सकते हैं नोटेशंस को यूज करते हुए बना सकते हैं. अगर आपको कोई और नोटेशंस चाहिए हैं या शेप्स चाहिए हैं तो आप उनको सर्च कर सकते हैं. ठीक है, मोर शेप्स के अंदर जाके भी आप देख सकते हैं डिफरेंट ऑप्शंस गिवन है तो इस तरह से आप लेवल 0 DFT बना सकते हैं. द नेक्स्ट इज द एक्सरसाइज और ये हम लोग करेंगे जो आपकी नेक्स्ट एक्सरसाइज और ये हम लोग करेंगे जो आपकी नेक्स्ट लैब होगी. एक्सरसाइज हम लोग लैब वर्क में कर लेंगे. जो स्टूडेंट लैब्स नहीं ले सकते उनके लिए मैं बता दूं कि लैब टास्क होगा DFT diagrams that you have to submit on the classroom. I have already made a lab task assignment for the students, and it is a group assignment or a group task. इसके अलावा आपको ये सबमिट करवाना होगा नेक्स्ट वीक तक. And that's all for today. आज recap हम लोगों ने आज क्या पढ़ा है. हम लोगों ने देखा डेटा फ्लो डायग्राम क्या है, इसके सिंबल्स म्यूटेशंस क्या हैं और ये इसके लेवल्स क्या हैं, इसके अलावा इसको किस तरह से ड्रॉ किया जाता है. थैंक यू. अल्लाह हाफिज.